Hello bachcho, welcome to GATE Wallah. So today I am going to give Maha Revision on computer organization and architecture. So I hope all of you have done, all of you have seen the paper of GATE electrical and GATE instrumentation. So आपका GATE electrical and GATE instrumentation paper देख के आपको कुछ आइडिया आ चुका है गेट इलेक्ट्रिकल में मेजरमेंट्स का कैसा आया है, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे आपका कोर सब्जेक्ट लाइक एनालॉग कंट्रोल्स डिजिटल कैसा आया है. सो बेस्ड अपॉन दैट आपको एक प्लान ऑफ विजन हो सकता है. मेरा ईसी में भी ऐसा मॉडरेट टू लो लेवल आ सकता है. नो एक्चुअली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट देयर इज एनालिसिस. ओके, सो इलेक्ट्रिकल पेपर वाज समवॉट मॉडरेट, instrumentation paper also moderate, so we expect ECE to above moderate also. Sometimes it can be tough also. I hope it should be a good paper. Excuse me. आपको एक अच्छी टाइम मिला है एनालिसिस करने के लिए. ओके, so you have a better time of planning for the GATE ECE paper. Okay. So now COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एक नया सब्जेक्ट है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है. क्योंकि अर्लियर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेस भी रहता था, अभी COA ऐड हो चुका है. COA ऐड हो चुका है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ऐड हो चुका है. सो इसका वेटेज कितना हो सकता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये महा रिविजन में हम पूरा डिस्कस करेंगे. COA का कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो बेटा. जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार सेशन को लाइक मार लो. एंड जितने लोग लाइव में हैं, यस, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम ECE राइट. ओके, आपका एग्जाम February 15 को है. सो February 15 आफ्टरनून को आप एग्जाम है. लास्ट ईयर वी गॉट ए क्वेश्चन ऑन दी COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे, सर ये COA सब्जेक्ट CSE ब्रांच के लिए भी है, हमारे लिए भी है, तो क्या टॉपिक्स आ सकता है. एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, द पैटर्न ऑफ CSE पेपर एंड द पैटर्न ऑफ ECE सिलेबस फॉर COA इज नॉट सेम. आपको ये याद में रखना है, COA का जो टॉपिक्स है एंड द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस फॉर COA इज एंटायरली नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक CSE पेपर. CSE के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर फुल लेंथ सिलेबस है एंड बहुत अच्छा वेटेज भी है. हमको थोड़ा 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लगभग मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. अब तक तो एक ही क्वेश्चन आ चुका है. गेट 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है. ओके माय डियर. सो आज मैं क्या टॉपिक्स डिस्कस करता हूं, देखो गेट में क्या क्या टॉपिक्स मैं डिस्कस करना चाहता हूं इधर. तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस लाइक बेसिक्स ऑफ COA, लाइक व्हाट इज architectures like von Neumann architecture. Okay, what is von Neumann architecture and what is Harvard architecture. Okay, and इसके साथ साथ what is CISC and what is RISC, ये हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो ये बेसिकली these are the basics of the COA. ओके, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे. केवल 4 to 5 टॉपिक्स है. मशीन इंस्ट्रक्शंस के बाद हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस करेंगे. 2 घंटे में एक पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग. तो ये है हमारा पूरा टॉपिक्स. ओके बेटा, तो जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार थम्स अप दिखाए बेटा. आप जब लोग ECE के ब्रांच है, यस, शुभोजित दत्ता ECE ब्रांच है, जॉन अब्राहम, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिलेबस, दैट्स इट. ज्यादा सिलेबस नहीं है COA का, COA का केवल 4 टॉपिक्स है. ओके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मशीन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड्स एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ये पूरा 4 टॉपिक्स है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ basics of COA. So what is a computer architecture? कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या बोल सकते हैं, मेमोरी है क्या सर? सी एक्चुअली ये है ना, हमारा क्वेश्चंस की तरीका डिफरेंट हो सकता है. COA is a subject which is placed as a replacement of microprocessors and microcontrollers for ECE under the digital electronics.
सो थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेस का फ्लेवर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने 2023 का क्वेश्चन दिखे तो आपको ये यस यू कैन वॉच दिस शिवम, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ काम नहीं है तो आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल गेट ईसी के लिए है। गेट ईसी का एग्जाम February 15 को चालू हो रहा है। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ COA चाहिए बोलते इधर आप अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में 3 क्वेश्चन आने की चांसेस है। मेजरली EC बच्चों को ये बेसिक्स में पूछते हैं। So computer architecture is a blueprint for design and implementation of a computer system. It provides the functional details and behavior of a computer system and what to do. So basically क्या है ना, COA is having 2 terms, एक architecture है, एक organization है। तो architecture क्या डिफाइन करता है, organization क्या डिफाइन कर सकता है, तो ये देखना है आप। आर्किटेक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या दिख रहा है। आर्किटेक्चर क्या कवर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या कवर करेगा, समझ में आपको? आर्किटेक्चर का कवर करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या कवर करेगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ। आपको क्लैरिटी होना चाहिए सेशन। ओके, इज इट क्लियर माय डियर? सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट व्हाट टू डू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट व्हाट टू डू, दैट इज द पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो अगर आपने एक हाउस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, अगर आपने एक हाउस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो उसका पहले ब्लूप्रिंट रहता है ना। सो आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द ब्लूप्रिंट। आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द ब्लूप्रिंट। आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द ब्लूप्रिंट। आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द ब्लूप्रिंट माय डियर। व्हाट टू डू, अगर हमने एक घर प्लानिंग कर रहे, एक होम प्लानिंग कर रहे, सो पहले ब्लूप्रिंट होता है ना प्लेस में, और प्लाट को लेते हैं, प्लाट में कहाँ कहाँ डिवीजन करना है, ब्लूप्रिंट रहता है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद किचन एंड हॉल ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन फर्स्ट ब्लूप्रिंट करते हैं ना, व्हाट टू डू, मैं कैसा कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। So that is what the architecture. Please make a note of this point. Computer architecture is a blueprint for the design. It's a blueprint for the design and implementation of a computer system. It provides only functional details and behavior of a computer system. What is computer organization? Computer organization अलग है. Computer organization details with how to do. So organization की बात क्या है? Organization is all about the how to do. Organization बोलो तो क्या है? Organization क्या करता है? Organization करता है how to do. Okay. How to do. Two session. So for example, अगर आपने organization में क्या है ना? How long will the same session here, sir? Okay. Session will be up to 2 hours, at least 2 hours. So organization is all about the interconnection of the various blocks. Organization is all about the interconnection of the various blocks. For example, if you take, this is a CPU and this is the RAM, this is the ROM, and these are the IO ports, and these are some external peripherals. So how the CPU is making communication with RAM, ROM and IO ports and some external peripherals, how these are interconnected to each other, how these things are interconnected to each other, how these things are interconnected to each other. So these all will come under organization. Organization is all about how you are making communication with the things. Architecture, yes, it is in syllabus. Yes, it is expected भाई. अरे expected है. That's what I am taking the Maha Revision session, क्योंकि लास्ट गेट 2023 पेपर देखो तो आपको क्वेश्चन आ गया मशीन इंस्ट्रक्शन के ऊपर. मशीन इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, गेट 2023 में आ गया, 2024 में भी आ गया. ओके, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स. ओके, सो ये है हमारा एक्सटर्नल पेरिफेरल्स. आज का क्लास से अगर आपको लक फेवर करे तो आज का क्लास से आपको जरूर 1 और 2 मार्क्स आने की चांस है. इसलिए ध्यान से सुनो बेटा, इसलिए ध्यान से सुनो ये सेशन. अगर अब तक आप प्रिपरेशन चालू भी नहीं किया, सर हमको कुछ भी पता नहीं सीओए के बारे में, सर गेट ईसी में सीओ सब्जेक्ट ही नहीं भी पता नहीं, सर अभी भी हमको पता हो गया गेट ईसी में ईसी सब्जेक्ट सीओ सब्जेक्ट है, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम माय डियर. अगर आज का क्लास 2 घंटे या 2.5 आवर्स का क्लास जो भी क्लास है, अगर आप अटेंशन में सुने तो आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा. सो जल्दी से जल्दी लाइक मारो भैया. सो आपको सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. सो फटाफट आप
थोड़ा सा तैयार हो जाइए. प्लीज हैव द पेपर एंड पेन विथ यू, एंड विथ दिस यू कैन have a good experience of COA within a short time, my dear. वन मार्क, अरे 1 मार्क को ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भैया. 1 मार्क 2 मार्क्स को ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ओके, चलो let us see how it happens. So now if you see the fundamental difference between computer architecture and computer organization, आर्किटेक्चर में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा. अगर ध्यान से देखो तो आर्किटेक्चर में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है. देखो, पर्पस ऑफ आर्किटेक्चर इज व्हाट ए कंप्यूटर शुड डू, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स. एक बार थोड़ा ये पर्टिकुलर स्लाइड्स को देखो बेटा, 2 मिनट में पूरा एक बार स्कैन कर लो. सर इसमें थ्योरी क्वेश्चंस एमसीक्यू आते हैं या जैसे अपने माइक्रो प्रोसेसर बताया तो कुछ कैलकुलेट वाले आ सकते हैं. दिखाता हूं मैंने कैसा क्वेश्चंस आता है. माइक्रो प्रोसेसर को ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकता है, थोड़ा सीओए का बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकता है. माइक्रो प्रोसेसर को ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं भैया, क्योंकि 2023 में कैरी फ्लैग पर क्वेश्चन पूछा, 2 नंबर्स दिया, एडिशन करो पूछा, विच फ्लैग इज गोइंग टू सेट. सो दैट डिपेंड्स. इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट. थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर की कॉन्सेप्ट की तरफ से आएगा. मेमोरी आर्किटेक्चर, प्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच में रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग डायग्राम्स, ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा. So first have this theory part here. First let us complete the theory part. Computer architecture explains what a computer should do first, and computer organization explains how a computer works. Next, target क्या है? Computer architecture provides a functional behavior of computer system. वो क्या सिस्टम है, फंक्शनली क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सिंपलर सिस्टम है. लेकिन organization provides a structural relationship between the parts of the computer system. What is the relation between CPU and memory? What is the relation between CPU and direct memory access? What is the relation between CPU and interrupt controller? What is the relation between microprocessor and ports? So ऐसा relation कहाँ आता है? Organization में आता है. Next, architecture deals with high level design. High level, first blueprint है ना, is a high level design, whereas organization deals with a low level design. Low level बोलो तो block to block कैसे communication होना है. एक input device है, DMA controller है, इसके दोनों में communication होना है. Low level में करता है organization. Next, here who are the actors? Architecture में actors कौन है? Architecture में actors hardware parts है. Architecture में hardware parts are the actors, and here actors in computer organization is the performance itself. Performance itself is the actor.
So in architecture and organization, which is designed first? Architecture is designed first, next organization is built on it. Okay, computer architecture is designed first, computer organization is started on after finalizing the architecture. Very very important, architecture finalize होने के बाद organization picture में आएगा बेटा. चल, so first we'll start with von Neumann architecture, one of the famous architecture. What is von Neumann architecture? Can anybody tell me what is von Neumann architecture? There are two types of architecture my dear, von Neumann architecture and Harvard architecture. ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? Can anybody tell me von Neumann architecture, Harvard architecture के बीच में अंतर क्या है? बताओ भैया, von Neumann आर्किटेक्चर और एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर. यस, डिफरेंस इन बस, इनपुट्स टू द प्रोग्राम, सिग्नल बस एंड मल्टीपल बस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके ओके. रितिका शर्मा, सीओ का वेटेज 1 और 2 मार्क्स है. कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो. अरे केवल 4 टॉपिक्स है बेटा, 4 टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट बताओ, केवल हमको 4 टॉपिक्स है यार. तो दीज आर द 4 टॉपिक्स. सिलेबस में यही 4 टॉपिक्स है ना, एक बार चेक कर लो आप. अगर आपके पास गेट ईसी का सिलेबस है तो आप चेक कर लो. बेसिक्स ऑफ सीओए, मिशन इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, यही है 4 टॉपिक्स. इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. या बस आर्किटेक्चर, बस का डिफरेंस है हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड न्यूमन आर्किटेक्चर. ओके, सो इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड न्यूमन आर्किटेक्चर व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस हियर इज, इन von Neumann आर्किटेक्चर, von Neumann आर्किटेक्चर क्या चलता है? इन von Neumann आर्किटेक्चर कोड मेमोरी एंड डाटा मेमोरी आर गोइंग टू बी टुगेदर. ओके, डाटा एंड कोर बोथ आर गोइंग टू बी टुगेदर. तो अगर ध्यान से देखें तो डाटा मेमोरी में डाटा memory and code memory are going to be both together. That is what we call as von Neumann architecture. If you see that von Neumann architecture, क्या है von Neumann architecture? Von Neumann architecture is based on the stored program computer concept. Stored program, that means the code itself is going to be stored in the data, where instruction data and the program data are together. That means code memory, code and data are going to be together. That's why it is called stored program concept. This program is stored in the data, stored in the same memory. This design is still used in the most computers today. Okay, code and data are going to be together. See, for example, अगर आपने 8086 microprocessor करा है तो, if you study the 8086 microprocessor, how many of you studied the 8086 microprocessor? In 8086 microprocessor, have you seen the concept of memory segmentation? You could have seen the concept of memory segmentation. Yes or not? Concept of memory segmentation. So in this we are having majorly total memory is 1 megabyte, but in that major segments are
code segment, data segment, stack segment, extra segment. Yes or not? So if you see here, this is a code segment, this is a data segment, this is a stack segment, this is extra segment. Am I right? So this is the code segment, data segment, extra segment, or stack segment and extra segment. So this is a stack segment, this is extra segment. Am I right or not? तो अगर ध्यान से देखें तो क्या है, कोड सेगमेंट कहाँ से एड्रेस स्टार्ट होता है, दैट इज गिवन एज CS रजिस्टर. डाटा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज गिवन बाय डाटा सेगमेंट रजिस्टर. स्टैक सेगमेंट कहाँ स्टार्ट होता है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर. सो अगर ध्यान से देखें तो क्या है इसमें, दिसमें ये कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट बोथ आर टुगेदर माय डियर. आई एम राइट और नॉट? कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट बोथ आर टुगेदर, code and data together. So as a situation came here, only I am telling 8086 is having how many data lines? 16 data lines. And 8086 is having how many address lines? 20 address lines. So 20 address lines means how much memory accessible? So the memory accessible will be 2 power 20. 2 power 20 means what? 1 megabyte. So this 1 megabyte is divided into 4 segments: code segment, data segment, stack segment and extra segment. Like this, all the segments. समझ गया आप? समझ गया? Yes, 60-bit processor. So this type of synthesis is going to be happen, my dear. Microprocessor subject में क्या होता है ना, this type of synthesis is going to happen. नितिका शर्मा, मोहम्मद नदीम, अभी क्लियर है आपको? So which of the microprocessor system is best example for von Neumann architecture? Which of the system is best example for von Neumann architecture? Can I say 8086 is the best example? So we can say 8086 microprocessor based system is the best example for the 8086 microprocessor based system is the best example for the von Neumann architecture. Von Neumann architecture. Is it clear up to now? मजा आ रहा है बेटा? अगर मजा है तो थोड़ा सिंबल दिखाओ बेटा, प्यार का सिंबल दिखाओ. कल तो मेरा गेट एग्जाम हो चुका है, कल ही आ गया मैंने आपका ये सेशन के लिए. सुबह सुबह मैंने क्लास लिया, अभी मैं और एक सेशन ले रहा हूँ. इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए. जितने लोग लाइव में मुझे थम्स अप दिखाइए बेटा, एनर्जी आना है. अभी 4 बजे हो रहा है. चलो, तो कोड मेमोरी एंड डाटा मेमोरी बोथ आर टुगेदर, देन दैट इज कॉल्ड एज von Neumann आर्किटेक्चर. क्लियर हो गया? चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन मोर स्ट्रक्चर है हार्वर्ड आर्किटेक्चर. हार्वर्ड आर्किटेक्चर. सो सी दिस हार्वर्ड आर्किटेक्चर. हार्वर्ड आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन मेमोरी सेपरेट है, डाटा मेमोरी सेपरेट है. ये दोनों के लिए सेपरेट बस है. इंस्ट्रक्शन मेमोरी सेपरेट, डाटा मेमोरी सेपरेट एंड दोनों के लिए सेपरेट है. ओके, सो कोड मेमोरी एंड डाटा मेमोरी बोथ आर नॉट टुगेदर. कोड मेमोरी एंड डाटा मेमोरी, code memory and data memory are separate. So the best example is microcontroller based architecture. Microcontroller based architecture, 8051 microcontroller follows this architecture. Okay, 8051 microcontroller follows. Okay, very good. तो आपको पाकिस्तान से भी फैंस है. अरे इतना फैंस है तो कैसा भैया, इंडिया में फैंस के लिए एसोसिएशन बहुत हो गया, भाई पाकिस्तान में भी फैंस है तो कैसे करूँगा. तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आर्किटेक्चर इज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर. ओके, सो इंस्ट्रक्शन मेमोरी सेपरेट है, डाटा मेमोरी सेपरेट है, एंड इसको कॉम्बिनेशन करने के लिए इसका बस सेपरेट है, इसका बस सेपरेट है, सेम बस नहीं है. सो लेट अस सी द डिफरेंसेस, क्लियर डिफरेंसेस. von Neumann आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बीच में डिफरेंसेस क्या है, एक बार देखो बेटा. अगर ध्यान से देखो von Neumann आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, इट इज अ थियोरेटिकल डिजाइन बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट. क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोड एंड डाटा टुगेदर. हियर इट्स अ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर. क्या है ये? मॉडर्न है. दिस इज नॉट द ओल्डेस्ट, दिस इज अ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द हार्वर्ड मार्क रिले बेस्ड कंप्यूटर मॉडल. नेक्स्ट, it uses the same physical memory address for instructions and data. For code, instruction and data, same memory is used. It uses separate memory addresses for instructions and data. Separate memory. Next, processor needs 2 clock cycles. Please make a note. 2 clock cycles to execute an instruction. It needs 2 clock cycles.
क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? आर्किटेक्चर है ना सिलेबस में, बेसिक्स ऑफ आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते पहले यही आएगा बेटा। अरे ऐसा बोले तो मैं क्या करूं, सी दिस सिलेबस। अरे आपको सिलेबस की बात ही नहीं मालूम है, क्या करूं मैंने? हाँ, बेसिक्स ऑफ COA बोलो तो क्या है, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए माइंड में। अरे बच्चों को इतना भी पेशेंस नहीं है, इतना भी पेशेंस नहीं है बच्चों को। चलो नेक्स्ट, processor needs 2 clock cycles to execute an instruction. Processor needs 1 cycle to complete an instruction. Processor needs 1 cycle to complete one instruction. Next, simpler control unit design and development of one is cheaper and faster. Control unit for 2 buses is more complicated. Please make a note. अगर कोई MCQ और MSQ आने की चांस है, अरे भैया देखो मैं इधर देख रहा हूं, आपको दे रहा हूं सॉल्यूशन। अगर आपने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज किया ना, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ये स्लाइड में है पूरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 8086 माइक्रो प्रोसेसर भी है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर भी है, लेकिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कैसा फीचर्स है, दो फीचर हम 8086 में नहीं यूज कर रहे। अरे आज हम माइक्रो प्रोसेसर 8086 नहीं यूज कर रहे बेटा, हम पूरा अभी ASIC यूज कर रहे। आर्डिनो आ गया, आर्म प्रोसेसर आ गया, एडवांस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स आ चुका है। दीज आर एर्लियर आर्किटेक्चर्स, समझ गया आपको? So see here, question can be asked like this: where the more complicated architecture is present, where the more complicated architecture is present in Von Neumann or Harvard, control unit for 2 buses is more complicated, which adds to the development cost. So which is more costlier? ऐसा डिस्टर्ब मत करो मुझे, ऐसा बेवकूफ बकवास क्वेश्चंस मैं ही पूछ रहा हूं। मुझे क्लास चल रहा है, क्लास सुनो, 2 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट बोलते क्या, मुझे गेट एग्जाम में क्या आएगा, कल एग्जाम में क्यों आएगा मुझे पता है, तो मैं भी जाके गेट एग्जाम लिखता ना। अरे बार बार पूछ रहे, अगर 2 घंटे आपको पेशेंस है, ये क्लास सुनो, ये महा रिविजन सेशन है COA के बारे में। आई एम नॉट श्योर दैट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज एग्जाम। अरे 4 ही टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स है, केवल 4 टॉपिक्स है, 4 टॉपिक सुनने की कोशिश करो ध्यान से। अरे if I know which is important, I only will write the gate exam. Why I will teach the gate here? 4 topics are there, my dear. Instruction pipelining है, addressing modes है, machine instruction से, organization architecture। थोड़ा ध्यान से सुनो, 2 घंटे लेसन पर लेसन प्लानर पर फोन करो। मैंने इतना मेहनत करके इतना स्लाइड्स आपको अच्छा स्लाइड दे रहा हूँ। ये स्लाइड्स आपको एक क्वेश्चन आ सकते हैं कल। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, वॉन न्यूमन और हार्वर्ड? हार्वर्ड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसमें 2 बसेस है। सो 2 बसेस में स्विचिंग करना पड़ता है। तो 2 बसेस बोलते उसको कंट्रोल यूनिट बहुत लोड पड़ता है उसके ऊपर। So that's why the development cost is more. Control unit for 2 buses is more complicated, which adds to the development cost. लेकिन इधर simpler control unit design है। Next, data transfers and instruction features cannot be performed simultaneously. You cannot access data and instruction at the same time. That is the problem in this architecture, Von Neumann architecture. But here, data transfers and instruction fetches can be performed at the same time, क्योंकि data transfer करने के लिए आपके पास separate bus है, instruction को access करने के लिए आपको separate bus है, ये single bus नहीं है, separate bus है, so आप both at the same time कर सकते हैं। So please make a note of these 3 points. ये 3 points के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मैं जो स्लाइड्स के अनुसार मैं जा रहा हूँ ना, वो स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कल एग्जाम में क्या आएगा, आई कैन नॉट टेल दैट। अगर आप स्किप करना चाहते हो, बकवास बंद करके छोड़ दो, ये सेशन छोड़ के आप प्रिपरेशन कर लो। ओके, डोंट वेस्ट हियर। यूज इन पर्सनल कंप्यूटर्स, कहाँ यूज करता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड वर्क स्टेशंस, whereas this is used in ASIC. What is ASIC? Can anybody tell me? ASIC में यूज करते हैं, ASIC बोलो तो क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट हमारा ECE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एम्बेडेड सिस्टम्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स में ये यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, समरी। सो ध्यान से देखो, समरी क्या है? Von Neumann architecture is similar to architecture except it uses a single bus to perform both instruction fetches and data transfer, so the operations must be scheduled. The Harvard architecture on the other hand used 2 separate memory address buses and 2 addresses for data and instructions,
which makes it possible to feed data into both the buses at the same time. However, the compute architecture only adds to the development cost of the control unit against the lower development cost of the less complex von Neumann to that one. So von Neumann is less complex, Harvard is more complex. हमको speed बढ़ रहा है, लेकिन first of all, I don't want to answer to all the comments. Okay. YouTube session में lesson पर ध्यान रखो. See, you know very well what type of questions you should ask, what type of questions not ask. Computer organization is a small subject which is added under the digital electronics. In the digital electronics, earlier we used to have microprocessor 8085 memory interfacing. In the place of 8085 memory interface, now they have added COA. In GATE 2023, we got one question. In GATE 2024, we got one question. I'm not sure that tomorrow GATE 2025 February 15th को one question आएगा, दो question आएगा, मुझे पता नहीं. But significantly we can expect one, at least one question I can expect. Sir, that one question के लिए अभी मैं 2 घंटे waste करना, is it necessary for me? Means that you decide. अगर if you are not interested to waste this time, you want to focus on other subjects, you can go ahead. But लो सर, I have not yet studied this subject till now, but अगर ये क्लास, ये 2 घंटे का क्लास अटेंड करें तो मुझे फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 2 आवर्स में आपको COA का पूरा पिक्चर मैं दिखाता हूँ. ओके, सो दैट्स व्हाट आई कैन सी. तो बार बार हमको यूट्यूब में ऐसे कमेंट्स मत फेंकना. सो देखो, कंटेंट पर फोकस करो. ओके, चलो. तो ओवरऑल अभी कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पर मैं पहले बताया भैया, एक बार फर्स्ट स्लाइड को देखो. फर्स्ट स्लाइड को देखो. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज architecture. Architecture is always what to do, क्या करना है. Organization is all about how to do, by using a computer, how to do. The various functional blocks are interlinked and how the communication is happening between those blocks, that is called organization. Okay, chalo. Now this is all about the von Neumann architecture. Chalo. Now let us move for one more important architecture. Next topic will go. So next topic will go as types of instruction. Types of instruction, और इसको हम बोल सकते हैं मिशन इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं उसको? मिशन इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं. मिशन इंस्ट्रक्शंस. तो मिशन इंस्ट्रक्शंस कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बेस्ड अपॉन ऑपरेशन. नेक्स्ट टॉपिक माय डियर. सो मिशन इंस्ट्रक्शंस कैसे क्लासिफाई हो सकता है? मिशन इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड एज बेस्ड अपॉन ऑपरेशन. So this is not only one processor or one controller, generally in all computers. ये सब्जेक्ट कैसा लिंक करना है माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंट्रोलर से लिंक करना है, लेकिन वी हैव टू टेक एज अ कॉमन फॉर ऑल द प्रोसेसर्स. तो जनरली एनी प्रोसेसर में हमको डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस रहता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस रहता है, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस रहता है, इटरेटिव इंस्ट्रक्शंस, लूप इंस्ट्रक्शंस रहता है, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी रहता है. ओके, सो दीज आर दी मेजर इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो डाटा ट्रांसफर बोलो तो क्या है? दे विल डील विथ डाटा ट्रांसफर बिटवीन प्रोसेसर टू मेमोरी, प्रोसेसर टू रजिस्टर, मेमोरी टू प्रोसेसर, ऐसा है. ओके, सो मूव, लोड इमीडिएट, लोड द अक्यूमुलेटर, सो दीज ऑल विल कम अंडर डाटा ट्रांसफर. सिमिलरली स्टोर अक्यूमुलेटर ऑल्सो विल कम अंडर डाटा ट्रांसफर. डाटा ट्रांसफर कहाँ हो सकता है? डाटा ट्रांसफर कैन हैपन बिटवीन द प्रोसेसर रजिस्टर टू द मेमोरी एंड मेमोरी टू द प्रोसेसर रजिस्टर. नेक्स्ट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा? Arithmetic instructions, addition, subtraction, multiplication, and or instructions. मुझे पता है क्या डिस्कस करना. मुझे पता है. थोड़ा सावधान सुनो ना. So add, sub and or. Okay, I am not seeing your comments my dear because it is deviating.
मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है? मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोले तो विच कैन कंट्रोल द मशीन, विच कैन कंट्रोल द प्रोसेसर स्पीड. So enable interrupt, disable interrupt, push and pop instruction they can control. Okay. Next, iterative instructions, loop instructions. Loop means it repeats. Conditional loop, loop until they are equal. Loop Z until zero flag is set. Okay. Next, branch instruction means from execution एक से एक लोकेशन से और एक लोकेशन को जंप होता है. तो क्या है वो? जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, जंप ऑन जीरो, जंप ऑन नो जीरो. So ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एनी प्रोसेसर. दिस इज क्या है? बेस्ड अपॉन ऑपरेशन. लेकिन बेस्ड अपॉन लेंथ भी और एक क्लासिफिकेशन है, बेस्ड अपॉन ऑपरेंड इंफॉर्मेशन, बेस्ड अपॉन ऑपरेंड इंफॉर्मेशन. सो जनरली एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा रहता है बेटा? इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ऐसा रहता है. इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट यहां ऑपकोड रहता है, तो यहां ऑपरेंड रहता है. तो दिस ऑपरेंड और ऑपरेंड्स भी हो सकता है. ओके एक ऑपकोड रहता है, उसके बाद ऑपरेंड और ऑपरेंड्स हो सकता है. ये ऑपरेंड कैन बी ए रजिस्टर, ए ऑपरेंड कैन बी सेट ऑफ रजिस्टर्स, ए ऑपरेंड कैन बी डाटा, ए ऑपरेंड कैन बी ए मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी. ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक थिंग कॉमन है, ऑपकोड तो कॉमन है. सो बेस्ड अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आर प्रेजेंट, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन. देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन. See here, based on operand information, there is a classification as 3 address instruction, 2 address instruction, 1 address instruction, 0 address instruction. Please make a note of this. यहां से आपको क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है. गेट 2024 में ये टॉपिक पर हमको क्वेश्चन आ चुका है. ओके वाह, ये टॉपिक पर हमको क्वेश्चन आ चुका है बेटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये टॉपिक पर हमको क्वेश्चन आ चुका है. 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. उसका मतलब क्या है? फर्स्ट लेट अस टेक 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. इन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन व्हाट हैपेंस ना, एक ऑपकोड के साथ 3 एड्रेस फील्ड्स रहते हैं. एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, एड्रेस फील्ड 3. सो ऑपकोड के साथ 3 एड्रेस फील्ड्स रहता है. सो सपोज मशीन इंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं? हमको मूव अंडरस्टैंडेबल है. ऐड बोले तो हमको अंडरस्टैंड होता है, ऐड ये कम अभी तो हमको अंडरस्टैंड है. लेकिन मिशन को इट इज नॉट ऐड. ऐड इज हैविंग ए कोड 01. ओके, मूव इज हैविंग ए कोड 010 लाइक दैट. ओके ना, समझ में आपको? तो ऐसा कन्वर्शन होता है. So that's why they are called mission instructions. So here, what is the maximum 3 address instruction? And opcode के साथ साथ address field 1, address field 2, address field 3 होता है. This address field can be a register. This address field also can be register. This address field also can be register. Suppose if I am writing add R1, R3, R2, that means what? The contents of R3, R2 are added. Then that is added to R1, and the result is going to be stored in R1. Okay. So this is the way of action. This is the way of action. This is another example. This is another example, my dear. Suppose if I want to make addition of R4 plus R3 plus R2, and if I want to store in R1, then what I will do? First R2 plus R3 I will do. I will store in R5, and that R5 I will do here, and R4 like this. समझ में आपको? So opcode के साथ साथ 3 address fields रहता है. ये 3 address fields can be registers, can be data, can be memory location. समझ में आपको? सब कुछ क्लियर है? These 3 address field can be, these 3 address fields can be registers. Okay, got it? तो मतलब ये है कि contents of R2 will be added to the R3, and this result is added to the R1, and this is stored in the R1. That is the meaning. Okay, that is the meaning. Up to now it is clear? Is it clear up to now? Is it clear, my dear? So this is the 3 address field instruction. Next comes the 2 address field instruction. Next comes the 2 address instruction. If you see the 2 address instruction, what is the 2 address instruction? ध्यान से देखो. 2 address instruction में क्या है? ऑपकोड के साथ साथ 2 address fields रहता है. ऑपकोड के साथ साथ 2 address fields रहता है. This is a mission code of opcode. This is a mission code of opcode, my dear. This is a mission code of opcode.
आप कोड के साथ साथ एड्रेस फील्ड 1 एड्रेस फील्ड 2 रहता है, आप कोड के साथ साथ एड्रेस फील्ड 1 एड्रेस 2 रहता है. So add R1 comma R3 if I mention the contents of R3 are added to the R1 and the result is going to be stored in the R1. The contents of R3 are going to be added to the R1 and the result is going to be stored in the R1. So one of the operands is used as source and destination. Okay, so this itself is a source and that itself is a destination. Here two address instruction. Next comes the one address instruction. Next comes the one address instruction, my dear. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आप कोड के साथ साथ एक एड्रेस फील्ड 1 रहता है, आप कोड के साथ साथ एड्रेस फील्ड 1 रहता है. सो ऐड R1, सपोज इफ आई एम सेइंग ऐड R1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? कैन एनीबॉडी टेल मी? ऐसा इंस्ट्रक्शन कहाँ देख सकते हैं आप? ऐड R1. सो व्हेन आई मेंशन ऐड R1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दिस कंटेंट्स ऑफ द R1 शुड बी एडेड विद अनदर कंटेंट. एडिशन करने के लिए हमको दोनों होना चाहिए ना, एडिशन करने के लिए हमारे पास दो रजिस्टर्स होना चाहिए ना. So what is other register? Can anybody tell me? ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ आएगा? ऐसा इंस्ट्रक्शन कहाँ आएगा? विच माइक्रो प्रोसेसर में आएगा? ऐसा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आएगा. 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक डिफॉल्ट रजिस्टर रहता है. द डिफॉल्ट रजिस्टर इज अक्यूमुलेटर. डिफॉल्ट रजिस्टर क्या है? अक्यूमुलेटर. द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R1 आर एडेड टू द अक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड इट इज स्टोर्ड इनटू द अक्यूमुलेटर अगेन. सो सिंगल एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन में, सिंगल एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन में अक्यूमुलेटर की मेंशन करना जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट द अनदर रजिस्टर टू बी एडेड इज अक्यूमुलेटर. समझ में आया? समझ में आया बेटा? सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है. तो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू व्हाट आर्किटेक्चर? One address instruction is similar to what architecture? It supports AC based architecture. AC means what? Accumulator based architecture. Accumulator based architecture. The best example for this accumulator based architecture is the 8085 microprocessor. In 8085 microprocessor, if I am mentioning the add B, the meaning of it, the contents of the register B are added to the contents of the register A and stored in again A. Got it? So this is the expected question. What is the expected question? This is the expected question. Single address instructions. It supports accumulator based architecture, single address instruction. Is it clear, my dear? So और एक बात है zero address instruction. So what is a zero address instruction? There is no any address in the instruction. Not at all any address in the instruction. Only आप code is present. क्या present है इसमें? केवल आप code is present. App code is present. So suppose if I am mentioning add. Now can you tell me, simply if I write add, what is the meaning of it? There is no operands. Then क्या add करना है sir? Yes, this is what it's very interesting. So when I say add now, it is related to stack. So generally in the top of the stack there will be the contents. Suppose this is 2 and this is 3. ओके, सो जो टॉप में है ना, सो इसको लेके 2 एंड इसको भी लेके ओके एडिशन करके, सो दो रिजल्ट इज गोइंग टू बी अपलोड इन द न्यू स्टैक. ओके बा, सो इट इज अपलोड इन द स्टैक लाइक दिस. सो whenever the operands are not present, that particular architecture is called zero address instruction architecture. So zero address instruction supports to stack based architecture. So please make a note. Both operands are taken from the stack. Have you noted this? Very interesting. So it supports zero address stack based architecture. Single address supports 8085 accumulator based architecture. Zero address supports stack based architecture. Is it clear, my dear? Is it clear or not? Up to now. Okay, chalo. Now let us go for the questions now. So try to answer this question. This was a question asked one of the previous exams of CSC, and try to answer this question.
आंसर प्लीज. 256. $42. ओह, बहुत बढ़िया. Any other answers? See here. First of all, what is given the question? Consider a digital computer which supports 3 address instructions. So first draw 3 address instruction diagram. So 3 address instruction का diagram कैसा होगा? So this is the opcode. Next, address field 1, address field 2, address field 3. So this is address field 1, address field 2, and this is address field 3. So consider a digital computer which supports 3 address instructions. Okay, each with 21 bits. Okay, so here each means what? It is a supports 3 instruction. The size of the instruction is 21 bits. Try to understand. That is a twist here. So how to understand here? Size of the instruction कितना है? Size of instruction दिया है 21 bits. So ये पूरा मिला के कितना होगा? So this total size will be 21 bits. 21 bits. Next, if address length is 6 bits, so this is 6 bits, this is 6 bits, this is 6 bits, then what is the size of the opcode? You can answer me. What is the size of the opcode? The size of the instruction is 21, then what is the size of the opcode? Size of the opcode कितना है? That will be 21 से each address field को 6 गया, 6 plus 6 plus 6, 21 minus 18, so that will become how much? 3. So the opcode size is 3. So size of the opcode is 3. So size of the opcode is 3 means what is the maximum number of, see, size of opcode. So size of opcode is 3. So size of opcode is 3 means what is the maximum number of instructions? 3 bits. Size of opcode means size of instruction. Size of the opcode. Okay, size of the opcode is 3. The code move or like that. So 3 bits. Size of opcode is 3 means 3 bits. So 3 bits से क्या हो सकते हैं? Combination 0 0 0 0 0 1 like that up to 1 1 1. So this I can take it as some move instruction. This I can take as add instruction. This I can take it as mul instruction. Like that, each instruction internally is having each instruction internally having 3 bits. So 3 bits से हमको maximum number of instruction. That means एक instruction को एक code लगाओ. 000, 3 zeros 1 instruction, 001 1 instruction, like that. So total number of instruction क्या है? Size of the opcode is 3 means number of instructions कितना होता है? Number of instructions means number of opcodes. So number of opcodes. Number of opcodes कितना हो सकता है? 2 power the size 2 power 3 8. 8 is the maximum. The question asked maximum and minimum तो 1 हो सकता है. Minimum तो minimum 1 होना चाहिए. So maximum is 8, minimum is 1. So please make a note of this answer. So this type of model questions हमको बहुत सारा पूछा है. Is it clear my dear? चलो. So last year का question देखो. This is the last year question.
try to answer. Last year question, GATE 2024 का क्वेश्चन. A digital computer which supports 32 two address instructions. So first of all, what is given? Number of instructions is given and two address field instructions. So कैसा लिखना है? So two address instruction का diagram लगाओ. So this is opcode, this is address field 1, this is address field 2. So ये है opcode, this is address field 1, so this is address 1 and this is address 2. So computer which supports 32 instructions, number of instructions कितना है? Number of instructions is 32. Number of instructions is 32 means number of opcodes कितना है? Number of opcodes instruction same 32. So what is the size of opcode? What is the size of opcode? So आपके पास कितना बिट्स होना चाहिए? अगर 3 बिट्स है तो आप मैक्स 8 इंस्ट्रक्शंस जा सकते. अगर 4 बिट्स है तो साइज 4 बिट्स है तो मैक्सिमम 2 पावर 4 16 तक जाते. अगर आपके पास 5 बिट्स है तो मैक्सिमम 32 बिट्स जा सकते हैं. सो ऑपकोड साइज कितना हो गया? 5. सो कैसे कैलकुलेट करना? सो 2 पावर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 32. सो n कितना होगा? n इज इक्वल टू 5 होगा. गॉट इट माय डियर? ऐसा क्वेश्चंस करना है. ओके, सो दिस इज 8. ओके, नेक्स्ट एड्रेस फील्ड 1 कितना दिया है? एड्रेस लेंथ ईच इज 8 बिट्स. सो दिस इज एड्रेस लेंथ ईच 8 बिट्स 8 बिट्स. सो 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 हो गया. सो दिस इज 8, दिस इज 8. सो टोटल मिला के कितना हो गया? साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन 21 होगा ना. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन? 21 बिट्स. आंसर. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर. Okay, so this was the question asked in the previous examination. Is it clear, my dear? Clear hai? Chalo, let us go for the next question. This is GATE ESC CSE का question है. Try to answer this question. Try to answer this question.
आंसर बताओ बेटा इसका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा बच्चा आ रहा है, वेरी एक्सलेंट सेशन चल रहा है। या वेरी गुड क्वेश्चन। गेट 2016 में सीएससी का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, सीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कैसा आंसर करने इसको देखेंगे। ओके सो फटाफट करवाएंगे। फर्स्ट सिमिलर टू डाटा, फर्स्ट क्या दिया है, ये प्रोसेसर हैज 40 इंस्ट्रक्शंस, सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितना है, ये प्रोसेसर हैज 40 इंस्ट्रक्शंस, सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया है, number of instructions is equal to 40, number of instructions is equal to 40 means number of opcodes कितना है, number of opcodes is equal to 40, number of opcodes is equal to 40, then what is the size of opcode my dear, थोड़ा डिजिटल बोर्ड को प्रॉब्लम हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, साइज ऑफ opcode कितना होगा, सो मैं अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, अगर आपके पास 3 बिट्स है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिजिटल नंबर, 2 पावर 3, अगर आपके पास 4 बिट्स है 2 पावर 4, आपके पास 5 है 2 पावर 5, आपके पास 6 है 2 पावर 6, अगर नाउ टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑपकोड, 5 और 6, व्हाट आई शुड टेक, 5 और 6 हियर, नाउ टेल मी, प्लीज टेल मी द आंसर, 5 लेना है 6 लेना है, जल्दी बताओ, अगर 5 लिए तो क्या होगा, इट इज 32, मैक्सिमम इज 32, बट मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना है, 40 आना चाहिए, सो 6 लिए तो क्या होगा, 2 पावर 6 64, 64 में 40 कवर हो गया ना, 24 बाकी है, 24 अनरिजर्व्ड है, हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, अभी बाकी है, लेकिन 40 इंस्ट्रक्शंस तो कवर हो चुका है ना, यस, सो व्हाट इज द टेक्निक हियर, 2 पावर n should be greater than or equal to 40, so that is satisfied by not 5 6, so हमको साइज ऑफ द ऑपकोड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाटा क्या है, 24 जनरल पर्पस रजिस्टर्स, सो द नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स, नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स कितना है, 24, सो कैसा है, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू फॉर ऑल दिस रजिस्टर, आपके पास 3 बिट्स है तो आप 8 रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास 4 बिट्स है तो 16 रजिस्टर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके पास 5 बिट्स है तो 32 रजिस्टर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, so what is the number of bits required, again same, 2 power m should be greater than or equal to 24, m should be 4, no, m should be 5, so अगर 5, so that means 5 bits होना है, कैसे अंडरस्टैंड करना, 5 बिट्स 1 2 3 4 5, so this is r0, 1 2 3 4 5, this is r1, 1 2 3 4 5 r2, ऐसा, that means all zeros, 0 0 0, that is a code for r0, 0 0 0 1 r1, 0 0 0 1 0 r2, all ones, 1 1 1 1, that will be r23, ऐसा, एक रजिस्टर को एक कोड दे रहा हूं मैंने, तो नंबर ऑफ ऑपकोड्स आ गया, साइज ऑफ ऑपकोड आ गया, साइज ऑफ दिस आ गया, देखो क्या दिया है, ए 32 बिट इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द लेंथ, length is 32 bit instruction, has one opcode, has an opcode, 2 register operands and immediate operand, okay, so कैसा solve करना है इसको, so first draw the diagram, so always better to follow this technique my dear, इसके ऊपर questions आने की chance है, तो क्या है इसमें, 32 bit instruction है, it is what is the size is how much, 32 bit, 32 bit instruction है, and what it has a opcode, तो हमारे पास एक opcode है, हमारे पास एक opcode है, नेक्स्ट 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 रजिस्टर है, एंड नेक्स्ट क्या है, एंड इमीडिएट ऑपरेंड भी है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, so this is opcode, this is address field 1 which is register, this is address field 2, let us take register 1, this is register 2, and ये क्या है, ये immediate data है, देखो this is 3 address field instruction,
3 एड्रेस फील्ड में क्या हो सकते हैं, मैंने बोल दिया आपको, एक आपकोड हो सकता है, इसके साथ साथ 3 एड्रेस फील्ड्स हो सकता है। 3 एड्रेस फील्ड्स में एक रजिस्टर और एक भी रजिस्टर हो सकता है, लेकिन इसमें इमीडिएट डाटा बोलो तो क्या है हमारा माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा देता है ना, मूव AX 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड इमीडिएट डाटा। मूव AL सम 22, सो दिस इज कॉल्ड इमीडिएट डाटा। ओके, और माइक्रो कंट्रोलर्स में मूव A #55, so this is called immediate data immediately is mentioned, that is a form। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी क्या है, आपकोड का साइज कितना आ गया बेटा 6, साइज ऑफ द आपकोड कितना आ गया 6। नेक्स्ट रजिस्टर 1 का ऑपरेंड कितना आ गया 5, सो इसका 5 है, इसका 5 है, एंड व्हाट इज दिस 5 + 5 10 + 6 16, सो 32 - 6 + 5 + 5, so आंसर कितना है 16 बिट इज द आंसर माय डियर। दिस इज वाज आस्क्ड इन गेट 2016 फॉर CSE पेपर, सो मैंने कलेक्ट कर दिया आपके लिए, सो 16 इज द राइट आंसर। मजा आ गया, धमाधम दमदार। चलो थैंक यू सर। All of you are clear up to now? और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, लेट अस टेक और कुछ क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें बेटा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो। I will be more happy, why? Because this is a pattern of paper which is going to be expected। लास्ट ईयर हमको COA में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है नोट्स से, दिस टाइप ऑफ मॉडल क्वेश्चन आ चुका है, तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस नाउ। A machine has 24-bit instruction format, it has 32 registers and each of which is 32-bit long, it needs to support 49 instructions, each instruction has 2 register operands and 1 immediate operand. If the immediate operand is a signed integer, full stop, sign the comma, minimum value of immediate operand is dash, minimum value of immediate operand is dash। Okay, so try to do this man। Try to answer this question, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करो बेटा, फटाफट। So what is the data given? A machine has 24-bit instruction format, so length of the instruction क्या दिया है बेटा, so length solution है, let's take the solution। So length of instruction is given as 24। A machine has 24-bit instruction format, it has 32 registers, so length of the instruction is 24, number of registers कितना है, number of registers is 32, so number of registers is 32, number of registers is 32 means bits required for each registers,
बिट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच रजिस्टर कितना होगा, और साइज ऑफ द ईच रजिस्टर 2 power n should be greater than or equal to 32, so n is equal to 5. तो ये आ चुका है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस वी हैव यूज्ड, दिस वी हैव यूज्ड. It has 32 registers and each 32 bit long. That's okay. So it needs to support 49 instructions. It needs to support 49 instructions, my dear. क्या है? It needs to support 49 instructions. Okay. So number of instructions is 49. Number of instructions is 49. So what is the number of instructions means? Number of opcodes. So number of opcodes is 49. So what is the size of the opcode? Size of opcode क्या हो सकता है? Size of opcode क्या हो सकता है? 2 power m should be greater than 49. So m can be 5, 6. M is equal to 6. चलो next. So what it has? Each instruction has 2 register operands and 1 intermediate operand. So first let us draw the diagram of this one. Each instruction has, so let us take opcode, operand 1, operand 2, immediate. So this is what we call as opcode. So this is operand 1, address field 1. So what is address field 1? Yeah. What is given here? Each instruction has 2 register operands and 1 intermediate operand. So let us take this register 1 and register 2. So this is a register 1 and this is a register 2 and this is the immediate data operand. Okay, fine. So here number of registers is 32, means size of each register is 5 bits. So here 5 bits gone, here 5 bits gone. Opcode का size 6 है. So he has mentioned the length of instruction is 24. If the length of instruction is 24, but what is the question he is asking? If the immediate operand is a signed integer, first of all, what is the size of the immediate operand? First of all, what is the size of the immediate operand? So first to find out the size of the immediate operand, my dear. So size of the immediate operand will be size of immediate operand. Size of immediate operand कितना होगा? So 24 minus 6 plus 5 plus 5. So 5 plus 5, 10 plus 6, 16. So it will become 8. So this is 8. So now what is the maximum number of 2 power 8? Yes or not? So 2 power 8 means 256. So what is the question is asking? Is asking the, if the immediate operand is signed integer, then what happens? So for a signed integer, actually 2 power 8 means what? 256 na. But if it is a signed integer, it is what mentioned here question में, signed integer. Signed integer means कैसा start होता है? Minus 255 to 0 तक जाता है, 0 to plus 255 आता है. So total मिला के 256 बन गया. Do you understand? Sorry, minus, it is 256 na? It's 256. So he has mentioned immediate operand is a signed integer. So signed integer for 256. So 2 power 8 is equal to 256. So 256 कैसा लेना है? If it is an unsigned integer, 0 to 255 ले सकते हैं हम. 0 to 255 for unsigned. So if this is unsigned, the minimum will be 0, the maximum will be 255. But in the question he has clearly mentioned signed integer. So signed integer of 256 कैसा लेना है? So 0 से negative भी हो सकता है and positive भी हो सकता है. So this is minus 128. This is plus 120. Am I right or not? Minus 128 and this is plus 127. So that 0 to 127, 128 minus 128 to 0. So what is the minimum value he is asking? The minimum value क्या होगा? Minus 128 होगा. Very very good question. The right answer is minus 128. Am I right? Option B is the right answer. Very good. Sai Charan. मजा आ रहा है बेटा? So this type of questions. Question का clarity कैसा है ना? Question में concept क्या है? Digital का concept भी आ रहा है. This is what the question they are asking. 2023 में भी एक 2 digits दिया है, 8 bit number. 2023 पेपर बहुत इजी पेपर, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया.
2 operands, operand 1 is in A register, operand 2 is in B register, इसका value 1010 something, operand B some value 0010 something. Okay, okay ba? And he asked after addition which flag is going to set. Actually it is a microprocessor question, but COA का syllabus में पूछा है digital में. So that's what you have to understand, my dear. It is not core CSC questions, but they will ask you like this. Okay, so let us go for one more question. So these are the different questions, my dear, collected for you. So answer this question. Try to answer this question. आंसर प्लीज. या ये क्वेश्चन क्या है देखो. A CPU has 24-bit instructions. A program starts at address 300. Which one of the following is a legal program counter? Try to answer. A CPU has 24-bit instructions. A program starts at address 300. Which one of the following is legal program counter? सोच के बताइए बेटा. Program counter means what? First of all, आपको पता होना है program counter. What is a program counter? Program counter is a register. ECE is it's a register which holds the address of the next instruction. Which holds the address of next instruction. Which holds the address of next instruction. Okay, my dear. Which holds the address of next instruction. 24-bit instructions. 24-bit instructions. That means size of instruction is 24. तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो. Size of instruction is 24-bit. Yes, 24-bit instruction. Size of instruction is 24-bit. And each instruction is 24-bit. Each instruction is 24-bit means 3 bytes. 3 bytes. Okay, that means program starts at 300. Program starts at 300. For example, let us take this is the memory. So program starts at 300 address. Now tell me, if it starts 300, where the next instruction starts? If 300 is the starting address of instruction 1, where the instruction 2 will start? If the 300 is the starting address of instruction 1, what is the starting address of instruction 2? What is the next instruction address? Because each instruction occupies how many bytes? 3 bytes. So this is 300, 301, 302. So this total gone for first instruction. So the next instruction starts at 303. So instruction 303, 304, 305. So this is 3 bytes. So second instruction starts like this. So third instruction starts at 306. So first instruction starting address 300, second instruction starting address 303, next instruction starting address
306, next instruction starting address 309. So if you see the common feature like this, similarly if you go 312, 315, 318, 321, 324, like that it goes on maximum up to even. Now it goes on like this. Which of the following is a legal program counter address is asking. What is a common feature of this? These all are divided by 3. These all are divided by 3 or not? Why? Because this is a starting address. The starting address 300 divided by 3, remainder is 0. Starting address 303 divided by 3, 101, remainder is 0. So similarly, which of the following is this 400 divided by 3? Not possible. 500 divided by 3, remainder is not equal to 0. 700 divided by 3, remainder is not equal to 0. 600, remainder is 0. That means in the series 300, 303, 306, 309, okay, 590, 7 and 600. So that will be the right answer. Is it clear? So the given options must be divided by 3. Is it clear, my dear? Got it? Is it clear? So let us go for the next question. So what is the answer for this question? Sir, why 3 bytes gap means 3 digits? My dear, 3 bytes means what? Starting address. What is the size of instruction? In memory, one memory location can store 1 byte. So this is 1 byte. 1 byte. Instruction 1 is occupying 3 bytes. Instruction 1 is occupying 3 bytes. 300 next to 301, 302. Okay. So 3 bytes are required na. 300 mein first byte. 3 bytes. 24 bit na. 24 bits are divided like this. So 24 bits. First byte here, second byte here, third byte here, because one memory, it's a byte addressable memory. If specifically not given, the memory can be taken as byte addressable. Byte addressable means generally in digital electronics, आप पढ़ चुका है, in digital electronics, generally memory location can store 8 bit of the data. If nothing is mentioned specifically, we can take byte addressable. If suppose exclusively mentioned word addressable, then it is 16 bit. समझ में आपको? ऐसा लेना है. आपको डाउट क्लैरिफाई हो गया? चलो. Each memory location can store 8 bit of the data. 300 memory location can store the 1 byte. 301 can store the next byte. 302 can store the next byte. Like that, 3 bytes. This is byte 0, byte 1, byte 2. 3 bytes. 3 bytes means 24 bits. 24 bits, my dear. 24 bits. Okay, byte addressable was not known before. Thank you. Yeah, if nothing is mentioned in the question, by default, byte addressable you have to take. Suppose exclusively in the question mentioned as word addressable, 32-bit addressable, then according to the question mentioned, you have to take. But mostly, if it is not mentioned, byte addressable, क्योंकि हम digital electronics में generally क्या लेता है? Digital electronics में each memory location can store byte of the data. Okay, चलो, let us go for this question now. Yeah, I was talking about this question. The capacity of a memory unit defined by number of word multiplied by number of bits per word. How many separate address lines and data lines needed for a memory of 64K into 16? Try to answer this question. How many separate address lines and data lines needed?
Chalo, answer this question, my dear. The capacity of a memory unit is defined by the number of words multiplied the number of bits. How many separate address lines and data lines need? So how to understand this? 64K into 16. So generally a memory chip is represented by what? Generally a memory chip is represented by like this, 2 power n into m. Memory chip representation. Generally any memory chip representation ऐसा होता है. Memory chip का representation ऐसा होता है where n represents the data lines, n represents the address lines. Address line is a unidirectional and data line is a bidirectional. Data line is a bidirectional. This is a data line. Okay, so this is n, and this is m. N represents address lines and m represents data lines. So that is a general representation of a. So he has mentioned 64K into 16. 64K into 16. That means what? This is a 16 data line. You compare with this. So 64K means 2 power 6 into 2 power 10 into 16. This 16 don't convert. So 2 power 16 into 16. Okay. क्या होगा आंसर? 16 address lines and 16 data lines. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Not 8 data line, because he has very clearly mentioned in it is very clearly mentioned into 16. Try to understand, my dear, it is very clearly mentioned in 16. Address and 16 data lines, king. It is option D is the right answer. That is the point you have to understand. So this is the memory chip representation. Always remember, suppose if I want to represent 1 megabyte, byte addressable means what to represent? Byte addressable means one memory location can store like that. So that means 1 megabyte. That means 1 megabyte means 2 power 20 na? 2 power 20 into 8. So this is 2 power n into m. That means 2 power 20 into 8. This is 1 megabyte representation. 1 megabyte representation. Is it clear, my dear? Is it clear? Any doubts? Each memory location can store 8 bit of the data. So what is the meaning of this? If you write the memory chip like this, so this is a starting address, this is a starting address, this is the ending address. So ये है starting address, ये है starting address, and this is the ending address. Okay, starting address and ending address. 6 starting address and ending address. Is it clear? So 1 megabyte means what? This is number of address lines, this is data lines. So the maximum data that we can store in one memory location is 8 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay ba? So this is a byte, this data bus size. But what is the starting address? 20 address lines. Number of address lines is what? Address lines are how many? 20 address lines. 20 address lines means A0 to A19 ऐसा आता है. Am I right or not? A0 to A19. So how the size will be coming like this? So this is A0 address lines. कैसा represent करना देखो? A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, like that up to A19, A18, A17, A16. So like this. Okay, so minimum is 0 0 0 0 0 0. Okay, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. This is a minimum address location. So if you take an hexadecimal, 0 0 0 h. So starting address क्या है? 0 0 0 0 h. 5. 1 0 represents 4. 1 2 3 4 5. 20 address lines. So maximum address is 1 1 1 1 1 1 1 1 1. So all ones. All ones means ending address 1 2 3 4 5. So this is address.
So what is the range of address? 1 megabyte means what is the range? 000H to 5Fs. Okay, this is the range. Is it clear, my dear? Enter. Okay. Is it clear, my dear? 5FH. Let us move for the next topic, addressing modes. Next important topic, that is the addressing modes. All of you are following up to now, clear hai? So next important topic is addressing modes, my dear. So what are the addressing modes? Let us see. So these are typical types of addressing modes. So first, addressing mode means what? Addressing mode means what? Addressing mode means the way of mentioning an instruction. So what is addressing mode? Addressing mode is defined as what? It is a way of addressing an instruction. It is the way of addressing an instruction. Way of addressing instruction. Okay, way of addressing a instruction. So for example, in a classroom, if a student is there, the student can be addressed with roll number. I can call a student with his name, his nickname, or his designation, or his roll number. I can call Ramesh, or I can call class leader. I can call rule number 22. I can call topper of the class. There are different ways of calling a student. Similarly, there are different ways of calling an instruction. So that is what addressing mode. So the major addressing modes are implied or implicit addressing mode, stack addressing mode, immediate addressing mode, direct addressing mode, indirect addressing mode, register direct addressing mode, register indirect addressing mode, relative addressing mode, index addressing mode, base register addressing mode, auto increment and decrement addressing modes. So please make a note of all these addressing modes, my dear. जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए बेटा. आई एम डिस्कसिंग द addressing modes. नेक्स्ट टॉपिक इज addressing mode. जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए. Very good, perfect. So first one is the implied addressing mode. First one is the implied addressing mode. In this addressing mode, implicit addressing mode, in this addressing mode, the definition of instruction itself specifies the operand implicitly. It is also called as implicit addressing modes. No operands. That is a simple point. No operands in the. That means only opcodes will be there. No operands. Thank you very much, my dear. Thank you very much. ऐसा encourage होना चाहिए मुझे. ऐसा encourage होना चाहिए क्योंकि फरवरी 15 को COA में एक क्वेश्चन आ गया और 2 क्वेश्चन आ गया, आपको बेनिफिट होना चाहिए. So no operands, that is what we call as implicit addressing mode. The opcode itself will define the operand to be performed. So for example, if you see this example, if you see the example CMA means complement accumulator. So these are certain instructions. Complement accumulator, these are certain instructions where you cannot have any operands, my dear. Where you don't have any operands. Try to understand that.
the opcode itself will be representing the things. One second. Hello. Okay. So what is this now? In this, no operands, my dear. For examples, I will tell you many examples in microprocessor: store accumulator, clear carry, set carry, no operation. Okay, what? No operation, HLT. Okay, no operation, HLT, store accumulator. These all are the instructions. The instruction CMA is an implied mode instruction. In a stack organized computer, zero address instructions are implied mode address instruction. So just before I mentioned add, do you remember? Just before मैंने mention कर दिया, ये microprocessor subject आपको पता है, microprocessor में पढ़ चुका है, लेकिन ये है computer organization, add instruction no operands. Sir, add instruction के लिए operands होना चाहिए ना, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? इसमें operands मेंशन नहीं किया है. It is called stack based architecture. So operands कहाँ से लेंगे? ऑपरेंड्स कहाँ से लेंगे? अगर इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड्स मेंशन नहीं किया एंड इट्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, हमारा स्टैक से लेंगे, स्टैक से ले सकते हैं, स्टैक से ले सकते हैं माय डियर. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू क्लियर माय डियर? जल्दी बताओ बेटा, कितने लोग लाइव में है, जल्दी बताओ. धमाधन, वेरी गुड. आपको सबको क्लैरिटी आ रहा है ना? चलो, so this is what we call immediate addressing mode. Next comes the immediate addressing mode. Immediate addressing mode. Okay, next one is the immediate addressing mode. In immediate addressing mode, operand is there, opcode is there, operand is there. This operand is the immediate data. See, for example, in this addressing mode, the operand is specified in the instruction itself. The operand is specified in the instruction itself explicitly.
explicitly, previously implicitly, here explicitly, instead of address field, an operand field is present that contains the operand. So examples, add immediate 10. Add immediate 10, my dear. So add immediate 10 means, yes, add immediate 10 means what? The 10 is added to the accumulator and the content is stored in the accumulator. That's it. So this is what, in अगर instruction में I है तो वो immediate addressing mode है. So add immediate 10. So we'll be increment the value stored in the accumulator by 10. Next, move r comma hash 20. R value is going to be 20. So this is microcontroller. This is microprocessor. This is microcontroller. Microcontroller में hash symbol रहता है, my dear. So always remember move immediate. So this is our move immediate AL comma 22. This is our microprocessor move immediate A comma 22. So move immediate A comma 22 and add A comma hash 42. This is microcontroller, this is microprocessor. ये गेट EC के लिए भैया, गेट EC के लिए है. Is it clear up to now? All of your understanding? Step by step we are going. Okay. So impaired addressing mode लिया है, immediate addressing mode लिया है. चलो. Next comes the direct addressing mode. Next comes the direct addressing mode. Very interesting. Direct addressing mode में क्या है? The address from where the data has to be accessed is mentioned directly in the instruction. So direct addressing mode में क्या है? The address of the instruction. So जहां से आप डाटा लेना चाहता है, that is mentioned in instruction itself. The address from where the data has to be accessed is mentioned directly. So address is mentioned directly. So opcode operand में address, but this is not the data, this is the address. If you go to that address, you will get the operand. If you go to the address, you will get the operand. Okay. See, for example, if I write the instruction like this. Okay. Add 0100. So this is what we call as address. 0100 is address. 0100 is a address, my dear. Is it clear? So for example, this is our microprocessor. ये है हमारा microprocessor में एक register है. Microprocessor में हमको एक register है. This is a microprocessor. This microprocessor में accumulator register है. For example, accumulator में 40 है. And ये है memory. Okay. Memory में at a particular location there is a address है 0100. So ये address में some content है, so 22. So it has to go there. 0100 में जो content है, that content is going to be added to the 40. Okay. So the result is 40 plus 22. The result is 62, and the 62 is stored back. That means जो मेंशन किया है ना ये ब्रैकेट्स में, that is the effective address. इसको हम बोलते हैं effective address बोलते हैं. It's called effective address. So the address where from you are going to get, that is mentioned in the instruction itself. Yes. ये तो CS का सिलेबस है. ये क्या बात में है? EC में COA सब्जेक्ट है भैया. EC में COA सब्जेक्ट है. ओके वाह. चलो. फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देता हूं मैंने. और एक एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेंशन LDA 3500H. So what is the meaning of this? LDA 3500H. LDA 3000, this address hai. So what is the meaning of this? Load accumulator by contents of 3000, by contents present at address 3500 location. That means if you take this as the memory, this is the microprocessor, this is the processor, this is the A register, this is the register A,
Right now it is empty. This is the memory. In the memory there is a location called 3500H location, 3500H memory location. Okay na? So these are 3500H memory location. Load accumulator, that means contents present in this 25, they are going to be loaded here. Similarly, store accumulator, suppose store accumulator 2500H, that means the contents present here are going to be 2500H. That's it. The address is mentioned in the instruction itself. So this is what we call as direct addressing mode, my dear. क्या बोलते हैं उसको? Direct addressing mode बोलते हैं. Either you can take the data from a memory or you can take the contents of this register to the memory. ये दोनों direct addressing modes है. Is it clear, my dear? चलो. How many memory references are there in this? How many memory references? Question can be expected here. How many memory references? What is the answer? Option A 1, option B 2, option C 0, option D 3. What is the answer? How many memory references in direct addressing mode? How many memory references in direct addressing mode, my dear? How many memory references in direct addressing mode? How many memory references here in this instruction? 2 times. No. Why 2 times? Only 1 time. The contents 0100 you are taking, that's it. Not 2 times. Only 1 time. Number of times the memory is referred is only 1 time. The number of memory times, suppose if I take this instruction LDA, so for example if I am taking this LDA instruction, so how many number of times the memory is referred now? How many number of times the memory is referred here? Loading the contents of the accumulator by 3005, only 1 time. Only 1 time, my dear. क्योंकि हमने एड्रेस डायरेक्टली मेंशन किया ना, इंस्ट्रक्शन में एड्रेस डायरेक्टली मेंशन किया है. अगर एक बार इंस्ट्रक्शन में एड्रेस मेंशन कर दिया, क्या होगा? वहां से एड्रेस से आए. इज इट क्लियर, माय डियर? मजा आ रहा है? धमाधम. चलो एकदम बढ़िया. ओके, is it clear? Only 1 memory references. Next I am going for indirect addressing mode. Next addressing mode is indirect addressing mode. So see here, in indirect addressing mode, in instruction opcode के बाद address रहता है, but that address is not the exact location where your operand is present. This address is not the exact location where your operand is present. ये address के साथ चलो, वहाँ और एक effective address मिलेगा, वहाँ से उधर जाओ, आपको operand मिलेगा. That means this is first time, this is second time. So 2 times you are going to access. 2 times you are going to access. See, for example, if I am taking like this, if I am, for example, for your understanding, if I am writing like this, add 0100 is address, but 2 times square brackets. Suppose this is a way of representation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, this is the memory. So this is the memory. So this is our address. This address is 0100. You understand? So, but 0100 में जो है, for example, let us take 0100 में 0020 है. Now you tell me what is going to happen, and 0020 comes here. This is again 0020 है. So here I have a content called 25, and this is my microprocessor. This is my accumulator register. This is my accumulator register. So this accumulator register may I am having 40. So now what is going to happen? You please tell me the answer. If I mention this instruction as add within the square brackets 2 times 0100, what is going to happen? What is going to happen?
जल्दी बताओ बेटा, what is the answer here? 2 times mention किया है square brackets, so what is going to happen? What is the answer here? जल्दी बताओ. 65, very good. But how many times the memory is referred? So first when I mention within the square bracket 0100, so 0100 is effective address, but in that effective address what is present? See, this time first time it is going here, first time memory reference is happening, first reference, okay, but in that what is present is not the data, this is also effective address. Okay, directly 0100 is not given, 0100 within the square brackets means this is another effective address. So now this is effective address, so this effective address if you go 0020 इसमें data है, so this is second reference, so that 25 is added to this 40 plus 25, now the answer will be 65. So how many number of memory references? How many memory references here? How many memory references in indirect addressing mode? Options, answer is 2 times. Directly जो mention हो रहा है ना, that is not the address. If you see here, this is C, this is the picture I have very clearly given. You are going to that, इसमें आपको address मिल रहा है, वो address के पास जा रहे हैं, वो address के पास जा रहे हैं. Okay, so this is direct, sorry. दिस हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें ऑपरेंट आपकोड के साथ एक एड्रेस दिया है, उधर जा रहे हैं, बट उसमें आपको डाटा नहीं है, एक और एक एड्रेस से वहां से और एक एड्रेस को जा रहे हैं, दैट इज आपको ऑपरेट. समझ में आपको? 2 times डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेस. समझ में आपको? दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. मेमोरी इज रिफर्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स? 2 times माय डियर, 2 times. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम. मजा आ रहा है? चलो, let us move for the next. Next one is register direct addressing mode. Next one is the register direct addressing mode. Register direct addressing mode. So register direct addressing mode में क्या होता है? देखो, this is a register addressing mode. Now you tell me how many register addressing mode में both are registers. The operand is contained in a register set. The address field of the instruction refers to a CPU register that contains the operand. So for example, if I write like this, examples I will give. Add A comma B. Add A comma B. These both are registers. So the contents of the B will be added to the contents of the A and the result is stored in the A. Got it? So like this. Or if you take a microcontroller instruction, add R1 comma R2, the contents of R2 will be added to R1. My question here is, how many number of memory references here? Number of memory references here. How many number of memory references here? In register addressing mode, how many number of memory references? In register addressing mode, how many number of memory references? Please answer. In register addressing mode, how many number of memory references? Number of memory references in register. Number of memory references in register addressing mode is 0. Okay, wow? 0. Why? Because you are not going to memory, you are going to register set. Register set is a part of the register, na? See, for example, this is microprocessor, this is our memory. Okay, so if I am writing a program, add R1 comma R2, suppose like this. Registers are a part of the CPU and this is the memory. So when both the operands are present in the register, or if I write add A comma R1, add A comma R1. So this is A and this is R1. So these two are the compartments in the registers. These registers are present. Registers are present in a register set. This register set is present in CPU, not memory. Registers are the part of the CPU or part of the memory? Registers are the part of the CPU, my dear.
registers are not the part of the memory. Is it clear? Yes or not? So there are no memory references. So for register addressing mode, the number of memory references is equal to 0. Number of memory references is equal to 0. Yes. Why? Because both the registers are present in CPU. If you say add A comma B, if you say add R1, if you say anything, both the registers are present in the CPU only. समझ गया आपको? चलो. Like this, we can follow the remaining addressing modes also. That is not a big deal. Okay. Okay, like this you can follow the remaining addressing modes also. Like this only we can follow them. Okay, so I'm going for the next important topic, my dear. The next important topic is pipelining. Time running ho raha hai, so I will go for the next important topic, instruction pipelining. Dekho, what is pipelining? Anybody can define what is pipelining? What is pipelining? Anybody can define? What is pipelining? Pipelining बोलो तो क्या है? Simple. Pipelining बोलो तो लाइन में है सब कुछ. That means एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो रहा है और एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है. So what is the meaning of it? Prefetching the next instruction while the first instruction is under execution. I am executing this instruction, but while I am executing this instruction, another instruction is in ready. उसको हम बोलते हैं pipelining बोलते हैं. Pipe, just you open the tap open करो, पानी आ रहा है, लेकिन पानी इधर एग्जिट हो रहा है, लेकिन अदर साइड से पानी एंट्री हो रहा है ना. समझ में आपको? पाइपलाइनिंग में क्या हो रहा है? एक पानी का बॉटल, पानी बाहर आ रहा है और दूसरे एंड से पानी एंटर हो रहा है. So that is what the fastness, that is what the speed, that is introduced by which organization? Intel organization. Prefetching the next instruction while the present instruction under execution, that is called the pipelining. Okay, so when a series of inputs need same operation to be performed, then pipelining can be applied without changing much of the hardware resources. See, देखो, ध्यान से देखो, this is a process. For example, 3 cars are there. Car repairing section, or there is a workshop. Okay, there is a mechanical workshop, car repairing section. So first what happens when the car comes? First it will go to the first request. Okay, it will go to the reception. Suppose I want to get the paint. I want to get the paint for the car. So what is the first section? Section A is request. I have to go to the reception. I have to tell my requirements. That is the first step. Second step, painting. Painting will be happen. Third step क्या है? उसको bill करो, exit करो. समझ में आपको? ऐसा many cars are coming. So then what I can do? For every car, these are the sequences. For every car, these are the sequences. What are the sequences of this car? First, request layout. Second, paint karo, which color paint or whatever that you take and accordingly do. Third, billing and exit. These 3 steps are same for each and every car. So now, first car came. It went to the second. When it went to the second, in this first position, another car can enter na? Another car enter na? And the first car went to C section. First car went to C section, then the second car will come to B section. When first car went to C section, second car went to B section, third car can come to A section na? Do you understand, my dear? So this is a section, this is a B section, this is a C section. A section पर request लेते हैं, B section पर painting करते हैं, C section पर हम billing करते हैं. C section पर हम billing करते हैं. तो A section पर क्या हो रहा है? car enter हो रहा है, next painting हो रहा है, next billing को हो जा रहा है. When the first car enters into the painting section, second car enter to this one. When the first car enters to the C section,
second car can come to the, when the first car enters the C section, second car can come to the painting section, third car can come to the A section. Are you understanding this point? So this is what we call pipelining. Non-pipelining बोलो तो क्या है? Non-pipelining बोलो तो first car has to complete A section, then it will go to B section, but nobody will enter into A section, and first car will go to C section, nobody will come to B section, and first car will go out. Then again second car will come. Pipelining, non-pipelining में difference क्या है? अगर नॉन पाइपलाइन में क्या है ना, फर्स्ट कार 3 स्टेजेस होने के बाद सेकंड कार एंटर होगा, इट विल डिले द टाइम. लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट कार सी सेक्शन में है, बी सेक्शन ए सेक्शन में दूसरे कार आ सकता है, सो आई विल इंप्रूव द फास्टनेस ऑफ द एग्जीक्यूशन. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पाइपलाइनिंग माय डियर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अप टू दिस? चलो, ओके. So one of the important area where you can expect the steps here. Okay. So let us see what is the pipelining things. It is a technique to decompose a sequential process into sub operations. Next, sub operations are performed in segments. Next, one operation performed in all segments. Every time if you see the 3 sections A, B, C, some task will be going on. C section में कार एग्जिट होते जा रहे हैं, वन कार. B सेक्शन में पेंटिंग चलते रहते हैं, A सेक्शन में नया कार एंट्री होता है. So this is how the pipelining action will take. So I will take a best example for you. See here. Now I am taking an example. Try to understand this step. I have taken an example. Maurice Monod has given this example. Maurice Monod. So I want to have a arithmetic operation A into B plus C, but not on one set. I have 5 sets of the data. I have 5 sets of the data. Set 1 10 20 30, this is A, B, C. Set 2 15 25 35, like that I have 5 sets of the data. On these 5 sets of the data I want to perform same action. On these 5 sets of the data I want to perform the same action. What is the same action? I want to perform A into B plus C. Okay, so see here, what is this? Are you understanding this? I'm going to explain the formula derivation for the pipelining. Okay, so what I want to do now, I want to perform a operation called A into B plus C. A into B plus C. So that means I have to take a operand A, I have to take another operand in B, I have to multiply, and that multiplied product has to be added to C. Enough. So A into B plus C, but the same action has to be happen in all the sets. See, for example, if I follow non-pipelining, how many T states? See here, first segment क्या चल रहा है? I will take A and B into registers R1 and R2. इसका product जो आता है ना, that I will store in R3. Next I will take C into the R4. Last step क्या है? R3 plus R4. I have divided into 3 segments. Segment 1 take A and B. Segment 1 में क्या चल रहा है? Take value of A, value of B. Segment 2 में क्या चल रहा है? Multiply A into B and add C. Multiply A into B and add C. A into B multiply करो and C को ले, sorry. Multiply A into B and C को ले जाओ. Segment 3 है product and C add करो. So that's what I am doing. Segment 1 taking A into R1, B into R2. First segment over. Second segment में इस दोनों को multiply करके result R3 में लगाओ and R4 take C. Next last segment में ये दोनों को sum up करो, R5 हो गया. समझ में आपके? Suppose if I am following non-pipelining, how many number of T states are required? So to complete first set, how many segments it has to cross? 3 segments. 1, 2, 3. In 1 I am taking R1, R2. 2 product and taking C. 3 are this plus. So how many number of T states total? 5 T states. But number of sets, sorry, 5 sets है. एक सेट के लिए, एक सेट कंप्लीट करने के लिए 3 T states है. 5 sets कंप्लीट करने के लिए 15 T states चलेगा. How many T states चलेगा? 15 T states चलेगा. Am I right or not? So non-pipelining में कितना चल रहा है? 15 T states. All of you understood this or not? Please tell me यार fast. Non-pipelining में हमको कितना चल रहा है? 15 T states चल रहा है.
So is it clear or not? Try to understand. I want to perform A into B plus C. ऐसा मेरे पास 5 sets है. What I have done, segment 1 I have taken. Segment 1 I have taken as taking the A and B into the registers. Segment 2 I have taken the product and R4 into one register. Segment 3 I have taken this product and this. So 3 segments. एक set per 3 segments. ऐसा 5 sets है. So non-pipelining method if I followed, each and every set has to follow these 3 sets. Am I right? Each and every set has to follow these 3. Total 15 t states. Suppose if I am following 5 t states, क्या होगा देखो. See here. Segment 1 में क्या ले रहे? A is into R1, B into R2. This is segment 1. Segment 2 में क्या हो रहा है? Multiply कर रहे and R3 ले रहे. Okay? And sorry, multiply करके R3 में जा रहा है. C is taken into R4. Segment 3 में क्या हो रहा है? R3 plus R4 हो रहा है. So this R3 plus R4 is coming into R5. 3 segments में चल रहा है. Now let us see that. See here what is going to happen. I am taken first t state, second t state, third t state, fourth state, fifth state. 5 t states I am taking. In first t state what I am taking? First I am taking the A1 B1. Okay ना? A1 B1. Next it is entering to second t state. Second t state में क्या कर रहा हूँ? A1 into B1 and C1 ले रहा हूँ. So during this time second data can enter na A2 B2. So by the time third t state, A1 B1 plus C1 is ready. So first set will be out after 3 t states. First set of the data is exit after 3 t states. Why? Because first segment ये चल रहा है, second segment ये चल रहा है, third segment ये चल रहा है. So then if it is a non-pipelining, the second set has to enter a T4, T5, T6, 3. Next segment rise up. So like that 5 sets, 5 into 3, 15 t states चलेगा. Is it clear? अगर मैंने non-pipelining follow किया, एक कार completing section A, section B, section C, then second car, section A, section B, section C, then third car. ऐसा 5 cars है, 5 cars के लिए मुझे 15 t states चलेगा, waste of time. लेकिन pipelining is different. Pipelining क्या है? When first set goes to this, second set enters here. When first set goes to last set, second set enters here, third set comes here. This is pipelining. समझ में आपको? So by the time fourth t state comes, what happens? This second set will be ready. Second set will exit. By the time fifth t state comes, third set will be out. By the time sixth t state comes, fourth set will be out. By the time seventh t state comes, fifth set will be out. So if I am following the pipelining, 7 t states में काम खत्म. If I am following non-pipelining, that means if I am not following pipelining, I will follow 15 t states. Is it clear or not? देखो, by the end of 3 t states क्या हो रहा है? Second t state में ये product and C1 आ रहा है, लेकिन उसके parallel में क्या हो रहा है? Parallel में A2 BT आ रहा है. And when it goes to the third t test, parallel में क्या आ रहा है? ये आ रहा है. Is it clear? So if it is following pipelining, I am following completely 7 t states में काम खत्म हो रहा है. If it is non-pipelining, मुझे 15 t states हो रहा है. For this better understanding, I will show this table. So here, see here, segment 1, segment 2, segment 3. Segment 1 में I am taking as R1, R2. Segment 1 में I am taking as R1, R2. So A1, B1 is taken. This is segment 1. But at that time, segment 2, segment 3 not yet started. Segment 2, what is the segment 2? A1 into B1 and C1 we are taking. By the time segment 3 has not started. But by the time segment 2, what is happening in segment 1? A2, B2, new entry. By the time A1, B1 enter to section 2, section 1 is free na. Section 1 में कौन आ सकता है? A2, B2 आ सकते हैं. By the time segment this is completed, A1, B1 plus C1, third cycle completed, then what happens? A3, B3 will enter. So if you see now, see the sequence: A1, B1 product and C1, A1, B1 product plus C1. Third cycle first set out. Next fourth cycle second set out. Fifth cycle third set out. Sixth cycle fourth set out. Seventh cycle last set out. 5 sets are completed. See the sequence.
This is what we call as pipelining. With non-pipelining 15 T states, with pipelining 70 states. Okay, see now. We are going to derive a formula. For example, if I am having 3 segment pipelining, so there are number of 5 sets. So what is the total? 5 into 3T, 15T. See here. Consider a K segment pipeline. Consider a K segment pipeline with a clock cycle time TP to perform n tasks. Time required to perform first task kitna hai? 3T. I have 3 segments. Okay. I have 5 sets of the data. To complete first set, I require 3T. That means K into TP. So time required to perform the first task kitna hai? Time required to perform first task kitna hai? K into TP, where K is the number of segments, TP is the time of pipelining T. Is it clear up to this? ध्यान से देखो, time required to perform remaining task. So मेरा पास 5 sets है, 5 sets में एक set गया, 5 sets में एक set गया. अभी remaining कितना है? 4 है. 4 के लिए कितना जा रहा है? 5 minus 1 into n minus 1 into TP. So that means time required to perform remaining n minus 1 task will be n minus 1 into TP. So what is the total time? Total time will be K into TP plus n minus 1 into TP. So total time for pipelining for n tasks will be K plus n minus 1 into TP. Non-pipelining will be n into time PP. Try to understand this. I have derived a formula. Take a time here and we'll derive the expression. Okay. For a non-pipelining, we'll take n into Tn. For a pipelining, we will take how much? K plus n minus 1 into time of pipelining. So this is the total time of execution for pipelining. Total time of execution for non-pipelining is just n into time of non-pipelining. So please note down these 2 formulas. मेरा पास 5 sets of data है. Each set takes 3. So 5 into 3, 15. And मेरे पास 5 sets of data है. And 5 plus, this is 3 plus 5, 8 minus 1, 7 TP. These are the 2 formulas. Time of execution for pipelining ये formula है. Time of execution for non-pipelining ये formula है. थोड़ा आप टाइम स्पेंड कर दीजिए. ये फॉर्मूलास का डेरिवेशन कैसा है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अभी थोड़ा टाइम कम है, आप फॉर्मूला पर ध्यान कर लो. वेयर K इज द नंबर ऑफ segments, n is the number of instructions, number of tasks, number of sets, whatever. Okay na? TP is time for each task in pipelining. So TEP means total time of execution. Total time of execution. Is it clear, my dear, up to this? And this is total time of non-pipelining. This is time of non-pipelining of one task. Generally, if this and this both are same, we can take NT. This is K plus n minus 1 to T. So let us go with one question so that you can have a clarity. So see this question. GATE CSE में पूछा है. Time running out, that's why I have taken this. A non-pipeline system takes 50 nanoseconds to process a task. A non-pipeline system takes 50 nanoseconds to take a task. For single task, it takes 50 nanoseconds. The same task can be processed in a 6-segment pipelining with a clock cycle of 10 nanoseconds. So this is time of pipelining. This is time of non-pipelining for one task. Determine the speed up ratio of the pipeline for 100 tasks. So first of all, let us see. What is the time of non-pipelining? 50 nanoseconds. What is the time of pipelining? 10 nanoseconds. How many number of segments? 6 segments. How many number of tasks? 100 tasks. 100 tasks. So first find out speed up ratio. Speed up ratio means what? Speed up ratio means time of non-execution, non-pipelining by time of pipelining. So this is an ideal phenomenon. Don't take this. Generally what happens? Okay, I will explain here. Just wait.
See this question. Non-pipeline system takes 50 nanoseconds to perform a task. A task. Time of non-pipelining कितना है? 50 nanoseconds. Okay. Next, the same task can be processed in 6-segment pipeline. So, in pipelining, number of segments K is equal to 6. Next, with a clock cycle of 10 nanoseconds, time of pipelining कितना है? 10 nanoseconds. This is for a task. Next, determine the speed up ratio for a pipeline for 100 tasks. So, what is 100 tasks? N is equal to 100. Here also N is equal to 100. Is it clear now? The data is clear. मेरे पास 100 instructions है. एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 50 नैनोसेकंड्स इन नॉन पाइपलाइनिंग में. द सेम थिंग इफ पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करें तो 10 नैनोसेकंड्स है. नंबर ऑफ सेगमेंट इज 6. सो व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इन नॉन पाइपलाइनिंग? व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इन पाइपलाइनिंग? कैन यू कैलकुलेट? ओके, सो एक इंस्ट्रक्शन के लिए 50 नैनोसेकंड्स, ऐसा 100 इंस्ट्रक्शंस है. सो n इंटू टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग. सो दैट इज n कितना है? 100 टास्क. एक टास्क के लिए 50 नैनोसेकंड्स है. तो टोटल मिला के 5000 नैनोसेकंड्स होगा. So this is the total time of execution for non-pipelining. All of you understood up to this? Non-pipelining. 5000 nanoseconds. Is it clear? Next, pipelining के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सिक्यूशन पाइपलाइनिंग के लिए क्या है? K प्लस, I told you for the first task K into TP, for the next task N minus 1 into TP. Yes or not? So K कितना है? नंबर ऑफ सेगमेंट 6. इसको ऑलरेडी हम ऐसा लिख सकते हैं K प्लस N माइनस 1 इंटू टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग. K कितना है? 6. N कितना है? 100 माइनस 1. टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग कितना है? 10 नैनोसेकंड्स. तो कितना होगा बेटा? 100 माइनस 1 99. ओके, 6 plus 100, 106 minus 1, 105. 105 into 10, 1050 nanoseconds. Am I right? Any mistake, you please tell me. 100 minus 1, 99 plus 6, 105 plus 105. So, what is speed up ratio? So, you can use common sense, my dear. What is the speed up ratio? Speed up ratio means what? Now here 5000 nanoseconds, here 1050 nanoseconds. Speed increased or decreased? Here 100 tasks with non-pipelining, 5000 nanoseconds is the time taken. 100 tasks with pipelining, 1050 nanoseconds. Speed is improved or speed up हो गया और speed down हो गया? Speed up or speed down? जल्दी बताओ बेटा. Speed up or down? Speed up हो गया. So what is the speed up ratio? I can take it as time of execution of pipelining ratio with respect to non-pipelining. That means this is 5000 nanoseconds divided by 1050 nanoseconds. If you simplify, how much you are going to get? You are going to get 4.7 times faster. So pipelining method is 4.7 times faster than the non-pipelining. Got it? Speed up हो गया. Speed up, S is called speed up ratio. So what is the speed up ratio? 4.7. Understood, my dear? Is it clear? That's it. This is the overview. I don't want to much confuse you, my dear. आपको बहुत कम time है. So I have given all the concept. थोड़ा addressing notes में मैंने skip कर दिया because of time. Okay, because of less time. मेरा notes ये जो कुछ है आपको मिलेगा. So वो notes से remaining addressing notes cover कर सकते हैं. अब तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैंने कवर कर दिया मेजरली. रिमेनिंग ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. So that also is there. But pipelining is important. That's why I spend much time on the pipelining. ये concepts पर आप थोड़ा फिर से एक बार brush up करके जाओ. Without having any knowledge of COA going to exam, by having this YouTube session you can hit something. Okay? चलो my dear. Thank you very much. आप आपका feedback share कर दीजिए बेटा. So that I can
Thank you very much. Okay, thank you, thank you. Booth's code. What is Booth's code यार? समझ में आ रहा है? Thank you very much. Thank you very much. पाइप प्लानिंग का फॉर्मूला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन k प्लस n माइनस 1 इंटू टी पी में k क्या है, n क्या है, वो याद रखने की कोशिश करो. जो पता है तो मैं भी लिखता हूँ ना एग्जाम. I know what is going to the EC paper. I cannot say that, but comparatively triple E instrumentation, both the papers came moderate. Both the papers came moderate, my dear.